बाहर बता रहे, बाहर लगाने को। Good afternoon and welcome to Nonsense Talk News. I am Pallab Ghosh with you. Before starting my live, I would like to thank Bumba Mukherjee Shankar, a Facebook friend of mine who was in Delhi, and yesterday he went to the Neep Karori Baba temple or the Birla Hanuman temple situated near ISBT inside Monastery Market, also known as Bela Road Hanuman Mandir. You have seen me doing numerous stories, bringing issues from this temple, doing stories from this temple. Bumba shared a live on Facebook, did a Facebook live highlighting the problem the temple is facing. I have no hesitation in saying that I came to know from his video and I am really thankful to him. I am right now in West Bengal and it's my misfortune, it's my bad luck that I am not able to stand with Panditji very close to me and my wife and the devotees at the temple in this hour of difficulty. I am a very simple person, but I vouch that whatever I have, whatever I can as a journalist, as a newsman, I would have been able to do that better had I been there. Else, I would have stand with them thick and thin in their protest. This temple, as I said, I and my wife regularly visit this temple, and this temple has a very strong and deep connect with both of us. In fact, we both have witnessed numerous miracles happening in this temple, and it is believed that Neep Karori Baba or Maharaj Ji is very much in this temple. This temple was inaugurated by Neep Karori Baba himself in the 60s. You all must be knowing about the story of this temple. I will be sharing the story later. I had done that in the past, but right now about the issue, which is really grave and serious. So whatever you see in this video, credit goes to Bumba Mukherjee Shankar and Panditji Gopal Swami, who shared these videos with me. मैं पंडित गोपाल स्वामी शास्त्री श्री हनुमान बिरला मंदिर बाबा नीप करोरी आश्रम बेला रोड दिल्ली। जो गुलजारी लाल नंदा जी होम मिनिस्टर साहब थे, गृह मंत्री, 1965 में 4 दिसंबर 1965 को गुलजारी लाल नंदा जी ने इस मंदिर का शिलान्यास किया था। महाराज जी ने छोटे वाले हनुमान जी हैं जो यहीं से प्रकट हुए थे। अभी कुछ दिन पहले आप सभी को ज्ञात होगा, हमारे उपराष्ट्रपति साहब जगदीप धनखड़ जी कैंची धाम के भी दर्शन करके आए थे। और इस समय तो सेंट्रल गवर्नमेंट में देखें तो आज हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार है। तो मैं चाहूँगा प्रशासन से और सभी भारतवर्षी निवासियों से कि हम मंदिर जो हनुमान बिरला मंदिर बाबा नीप करोरी आश्रम 1961 का ये जो बना हुआ है,
इसका मंदिर का रास्ता ना बंद किया जाए। जिस स्थान पे हम खड़े हैं ये जगह भी मंदिर की जगह थी। जब ये पुल बना तो उस समय जगमोहन साहब थे, हमें अच्छे से ज्ञात है, राजीव गांधी जी थे, वहाँ तक बात पहुँची थी। 3000 गज जमीन हमें मुआवजा दे रहे थे मॉडल टाउन के। तो हमारे पूज्य पिताश्री श्री नारायण बाबा जी ने जगमोहन साहब जो एलजी थे उस समय, उनसे बोला कि क्या आपके लिए मंदिर बन रहा है, ये पुल बन रहा है? उन्होंने कहा जी नहीं। क्या मेरे लिए पुल बन रहा है? उन्होंने कहा नहीं जी आपके लिए नहीं। तो हमारे पूज्य पिताश्री श्री नारायण बाबा जी ने कहा था ये पुल बन रहा है जनहित के लिए, इसका हमें कोई मुआवजा नहीं। जिस स्थान पे हम आज खड़े हुए हैं ये हनुमान बिरला मंदिर का आज प्रशासन की तरफ से मंदिर का गेट बंद किया जा रहा है, रास्ता बंद किया जा रहा है। तो हमारे जो भी यहाँ तत्कालीन इस समय सरकार है, प्रशासन है, उससे हाथ जोड़ के निवेदन है ये हनुमान बिरला मंदिर बाबा दीप कोरी आश्रम जो विश्व विख्यात है महाराज जी का स्थान, उसको बंद ना किया जाए। हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी इस डिपार्टमेंट में लोग हैं उनके लिए हाथ जोड़ के निवेदन है। यदि आपको कुछ भी आप बनाना है तो ये चाहे आप रोड की तरफ चले जाएँ, चाहे जमुना जी की तरफ चले जाएँ, वहाँ पे यमुना जी का, क्योंकि मैंने अभी सुना है ये लोग कह रहे हैं कि यमुना जी का जल नहीं आना चाहिए। तो हाथ जोड़ के इन लोगों से भी निवेदन है, यमुना जी का जल कोई नहीं रोक सकता महाराज। और यदि रोकना ही है तो एलजी साहब से भी हाथ जोड़ के निवेदन है बिल्कुल यमुना जी के पास में पुस्ता बनाए, बांध बनाए, जिससे कि और सब जगह होते हैं उसी हिसाब से बनाए। जय श्री राम, जय महाराज जी। Well, now on to the issue. Yesterday in the afternoon, officials from Irrigation and Flood Department, Delhi government, had reached the temple premises with JCB machine, and they threatened the temple staff, Pandit ji, that they would block the road come what may. Actually they are basically blocking the gate which opens on Ring Road, and their ploy or their argument is by doing this they would be able to stop the flood. I really don't understand how this gate will help in stopping the flood. There is absolutely no connection. And even if I accept the argument, then I would like to ask, and Pandit ji has also rightly asked, what about the gate which is half a kilometer away from this gate, which is actually the gate of the monastery market? Because this gate is also the entry point on Ring Road. Won't water enter from this road inside the premises? 2. This gate which they are actually capping, they are closing, is the official gate of this temple. So by doing this, I hate to say this, but they are playing some kind of politics, dirty politics. Because as we say, the timing is very conspicuous. Immediately after the NDA government coming into power, Narendra Modi, Prime Minister Narendra Modi resuming office for the third time, suddenly the Irrigation and Flood Department comes into action, comes with a JCB machine, hell-bent to stop the so-called passage of water through this gate. And they threaten the staff of the temple that they will cap this gate, they will block this road, come what may. This gate, as I said, is overfacing Ring Road. Similarly, the gate of the monastery market is also overfacing the Ring Road. If they don't cap the monastery market gate and just cap this gate, besides, I really don't understand, I fail to understand. It's beyond my understanding. How can blocking a gate and erecting it like a poster, like a wall, helps them to stop flood on Ring Road
or civil lines, because they had said, and I quote, Panditji told me in the morning, this is very objectionable. This is very objectionable what the government officials have said. They said, and I quote, हमें अंदर के लोगों से कोई सरोकार, कोई वास्ता नहीं है, हम बस सिविल लाइंस और रिंग रोड को फ्लड मुक्त करना चाहते हैं. We are least interested, we are least bothered about the people residing inside. We don't care about them. We are only concerned about the ring road and civil lines area. Why civil lines area? Saurabh Bhardwaj ji, the minister of this department, irrigation and flood department, Delhi government. Is it because Aam Aadmi Party's Supremo Arvind Kejriwal's residence is on civil lines? The same residence which was in news in the past because of trashing, abusing their own Rajya Sabha MP Swati Maliwal inside the drawing room of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. Why are you so much concerned about civil lines and ring road? You were not concerned earlier. Along with this, I would also like to share a statement that was published by the minister a few days ago. And I think there is some connection with this statement. A few days ago, Saurabh Bhardwaj said that we are going to make Delhi flood free. As you all know, monsoon is arriving, rains are expected, but this area doesn't go under the water every monsoon. This happens in once in a while actually. This is a low-lying area, and being adjacent to River Yamuna, this area gets flooded. Everything is true since ages. But once the devastating flood takes place, once in 4 years or 6 years, then this entire area goes under the water. And in such situation, right from ITO up to Model Town or University area, covering Yamuna Bazar, Kashmiri Gate, Lothian Bridge, near GPO, everything gets submerged under the water. But I still don't understand, by putting up a blockage of this particular gate, one particular gate, how will the Delhi Irrigation and Flood Department ensure that ring road and civil lines will be safe? Well, I was talking to Panditji Gopal Swami, and he expressed his anguish because the official of the department has said that they will block this gate come what may, and nothing can stop this. And as I said, they said that they are least interested, they are least bothered about the people residing inside, because they are concerned only about the ring road and civil lines. Well, I was talking to Gopal Swami in the morning. He is anguished, he is worried. These government officials of the Irrigation and Flood Department under Saurabh Bhardwaj's ministry have threatened that they would block this gate come what may. I hate to play politics. I hate to ask political questions. But I am sorry, this entire incident
gives me some kind of feeling, an uncanny smell of politics. As I said, timing. This entire incident comes when NDA government comes into power. Prime Minister Narendra Modi forms his government for the third time, and we all know the relationship between Aam Aadmi Party or the India Alliance with BJP. They said that we are least interested about the people inside. Sorry to ask, but whenever there is an election, whether people are inside or outside, these political people would go to them with folded hands and ask for vote. Or is it because Aam Aadmi Party has understood that hereafter they will not get a single vote in Delhi? हमारे पल्लव जी और शुरबानी को भी, फाल्गुनी घोष को भी हनुमान जी का, महाराज जी का सदैव शुभ आशीर्वाद। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये हनुमान बिरला मंदिर बाबा नीमकोरी आश्रम का जो ये गेट बंद कर रहे हैं, और जैसा कि आपने बताया कि ये पानी का बहाना है। यमुना जी तो जल देखो आता है 2-4 दिन के लिए आता है, साल में 360 दिन में जो लोगों को परेशानी होगी उसका इनको तो नहीं देखना, 2-4 दिन के लिए जो जल आता है उसके लिए ये लोग देख रहे हैं। तो उसके लिए इनसे हम हाथ जोड़ के निवेदन यही कर रहे हैं कि यमुना किनारे पे आप बांध बना दो, जो हमेशा की समस्या हो जाएगी, हमें भी नहीं होगी। दूसरा, इन्होंने एक बहुत गलत शब्द बोला हमें कि अंदर वालों को हमें नहीं पता, वो चाहे डूबें या चाहे उनका और गंदा शब्द था, वो मैं फ़ोन पे बोल भी नहीं सकता कि आप कुछ भी हो, आपका हमें कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ रिंग रोड को बचाएंगे, सिविल लाइन को बचाएंगे। तो हमने बोला कि आप यमुना जी के पास में बांध बना लो। अब तो एनडीए सरकार आ गई है, गवर्नमेंट के पास पैसे की भी कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई समस्या है। दूसरा, आप मंदिर को ही आप करना चाह रहे हो, साथ में मनुष्य का गेट आप क्यों नहीं बंद कर रहे हो? क्या वहाँ से यमुना जी का जल नहीं आएगा या हमारे यहीं से आएगा? आगे क्या बोलते हैं, हमारे रेड लाइट के पास में सारा ओपन इलाका है, तो यमुना जी का जल या कोई भी जल जो होता है वो समतल चलता है। ये नहीं होता पर्टिकुलर कि एक जगह से नीचे हो जाएगा या एक जगह से ऊंचा हो जाएगा, वो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वो जगह भी नीची है। यदि आप रेड लाइट के पास देखेंगे आगे, वहाँ पे पूरा ओपन पड़ा को। और धर्म की जहाँ बात आती है ना, हिंदुओं धर्म के लिए, जैसे कि आपने कहा ये पॉलिटिक्स हो रही है, एग्जैक्टली ये हमारे कुछ गलत लोग हैं प्रशासन के अंदर, वो लोग इस कार्य को करवा रहे हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है कि इसको धर्म को, धार्मिक को हमें ठेस ना पहुँचे और हमारे हिंदुओं के लिए भी ठेस ना पहुँचे। तो इसलिए आप ऐसा कुछ करें कि जो आने जाने का रास्ता भी रहे, चाहे वो यमुना जी के ऊपर पुल बनाएं या थोड़ा मंदिर का रास्ता छोड़ के फिर आगे बनाएं। ये मेरी आपसे है। और ये जो मनुष्य का रास्ता है वो इन्होंने खोला हुआ है, जो मनुष्य के गेट से आप आते हैं ना, उसमें इन्होंने कुछ ना तो मिट्टी डाली है ना शटर डाला है। फिर पुनः एक So may I now ask the area BJP MLA to come forward and help the temple premises from getting blocked. Don't do this, because कह रहे हो ये कल रहेगा या ऐसे नहीं, ये आज़ादी रहे, कल को इसके ऊपर आराम से पड़ जाएगा। बाहर से बनाओ और ये फंसेगा तो ये हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, यही बिल्कुल ठीक बात है। नहीं फंसेगा, ये बहुत पतला हो जाएगा भाई, नहीं गाड़ी नहीं आराम से निकल जाएगी। वहाँ देख लो भाई, ये फंसती है गाड़ी, हमेशा फंसती है, किसी का रास्ता फंसती है भैया। इसको सारे को भैया ट्रेन चलेगा यहाँ पे, मत बोलो आप, जो डिपार्टमेंट है, जिस भी डिपार्टमेंट से आप उन्हें कह दीजिए बात करने के लिए, बात करने के लिए। नहीं तो देखो, हमारे पिताजी पुल बना था ना, ये मंदिर का रास्ता बनवाया था, हमारे पिताजी बुलडोजर के आगे लेट गए थे, आज वो है नहीं हमारे महाराज जी। आज हम don't hurt the sentiments and emotions of the devotees. Mr. Bhardwaj, this is my request. You yourself visit the place and talk to Pandit Ji, Gopal Swami, who is a gem of a man, a thorough gentleman, who will share the anguish, the pain,
the worry with you. He is always willing to talk, always with a smiling face and blessing people, whoever comes there. Go and seek the blessings of Maharaj Ji. And now to the BJP, which has its MLA in this area now. Today we have the NDA government at the center. It's my request to Prime Minister Narendra Modi, Amit Shah, and others, including Yogi Adityanath, to take initiative and interfere in this. This is an iconic temple. Please stop this gate from getting blocked. This will hurt the sentiments and emotions of thousands of devotees. Please, Prime Minister Sir, I request you to personally look into this and stop this. And also, Lieutenant Governor Mr. Saxena, it's in your area. You are in Rajpur Road and this is in Civil Lines. Your neighbor actually. Please take the initiative, sir. You have been doing wonderful job. Mr. Saxena, it was because of you. The liquor politics was blasted, was exposed. Please, sir, please come into picture and take the initiative and stop from getting this gate, this road blocked. This is the only request I have on behalf of Non-Stop News. And lastly, not to forget Neep Karori Baba or Neep Karoli Baba, whatever name you want to call, Maharaj Ji is the reincarnation of Lord Hanumana. Jai Neep Karori Baba, Jai Maharaj Ji, Jai Hanuman Ji, Jai Shri Ram. This is Pallab Ghosh signing off for Non-Stop News.